हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे प्रॉप की मेकिंग एक्सप्लेन की है, देन इससे रिलेटेड चीज़ें भी बताई है और लास्ट में स्पीच भी ऐड की है। सो फुल वीडियो वॉच कीजिए। प्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले एक कार्ड शीट ली है और 2 प्रिंट आउट लिए हैं, एक इंडिया के मैप का और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इंडिया के मैप को 3 पीस में कट कर लिया और उसके बाद एक थिक कार्ड पे स्टिक कर दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था और अंग्रेज छोड़ के गए थे, उस समय भारत में छोटी बड़ी अनेक रियासतें थी जिनको जोड़ के एक भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सो प्रॉप के थ्रू यहाँ पे हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के ऐसे अलग अलग टुकड़े थे जिनके आपस में मिलने पे एक भारत बना है। यहाँ पे शीट के पीछे हमने मैग्नेट स्टिक किया है एंड जो मैप के पीसेज हैं उनके पीछे आयरन का पीस स्टिक किया है। मैग्नेट एंड आयरन के पीस को स्टिक करने के लिए हम टेप का या फिर स्ट्रॉन्ग ग्लू लाइक फेविक्विक वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के प्रॉप प्रेजेंटेबल लगते हैं और अपना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएंगे। Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. My name is Rashtriya. I am studying in senior KG. Today, I am here to present a speech on Sardar Vallabhbhai Patel. His full name is Sardar Vallabhbhai Patel. He was also known as Island Man of India. He was born on 31st October 1875 in Nadiad, Gujarat. We celebrate as National Unity Day every year. He played an important role in uniting India. He was a great Indian politician and freedom fighter. Sardar Vallabhbhai Patel became the first Home Minister and Deputy Prime Minister of independent India. The Statue of Unity, world's tallest statue, was dedicated